IIT जम्मू में नॉर्थ टेक सिंपोजियम का इनेकाद किया गया। वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल MVS कुमार ने इसका इफ्तिताह किया। इस मौके पर GOC शुमाली कमान लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी भी मौजूद रहे। IIT जम्मू का स्टाफ और तलबा भी इसमें हिस्सा ले रहे हैं। इस सिंपोजियम के लिए 180 सनती शराकतदारों ने इंदराज कराया है। इस मौके पर वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने कहा कि टेक्नोलॉजी की अहमियत बढ़ रही है। टेक्नोलॉजी एक ऑप्शन नहीं बल्कि जरूरत है। शुमाली कमांड और IIT जम्मू के दरमियान ताउन फौज और तालीमी इदारों की एक अच्छी मिसाल है। इस पहल का मकसद नए स्टार्टअप्स के लिए एक प्लेटफॉर्म मुहैया करना चाहिए। इसका मकसद शुरका के तकनीकी इल्म की बुनियाद को बढ़ाना है। इन्होंने कहा कि हिंदुस्तान की दिफाई बरामदात में इजाफा हुआ है। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल माहौल दोस्त अंदाज में किया जाना चाहिए। Institutions like IIT Jammu are hubs of innovation where the brightest young minds are nurtured and guided to push the boundaries of what is possible. The main objective of the Northern Tech Symposium 2023 is to augment technological knowledge base of participants and acquaint them with state-of-the-art technologies and commercially off-the-shelf solutions, or the COTS as we say, available in the defense sector. It is with the underlying aim to create awareness of contemporary technologies and hardware solutions available with Indian defense manufacturers under Atmanirbharata to meet ever-evolving dynamics in Northern Command with indigenous, innovative and future-proof technologies. The armed forces, in keeping with the initiatives of the Government of India, are committed to provide the necessary push and impetus to our defense manufacturers. The fact that India's defense exports have risen to an all-time high and that foreign governments are keen to procuring Indian weapons and systems amply establishes the potential that indigenous defense sector holds. The event is expected to enable greater engagements with Indian private sector, R&D organizations, giving an impetus to Atmanirbhar Bharat campaign. The concept of integrated warfare, where the Army, Navy, Air Force and other branches of the armed forces work seamlessly together, is essential in today's complex security environment. We must leverage technology to enhance interoperability and coordination among our forces. Furthermore, the defense sector is not immune to the broader challenges of sustainability and environmental impact. We must seek solutions that not only bolster our national security but also mitigate the environmental footprint of our operations. Use of technology must be made in an environmentally conscious manner. Let us embrace this opportunity to push the boundaries of our collective knowledge and pave a way for a safer, more secure world.